मीका मीका 6:8 कहता है मीका उसका 6 बाप 8 कहता है he has shown you a man, oh man, what is good and what does the Lord requires of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your gods. कि मीका कहता है कि खुदावन ने तुम्हें ओ आदमी, खुदावन ने तुम्हें अपने रास्ते दिखाए हैं कि क्या अच्छा है और क्या राइट है, और खुदावन क्या चाहता है हमसे कि हम क्या चाहता है हमसे कि हम जस्टिस करें, इंसाफ के साथ चलें, और मोहब्बत और रहम हमारे अंदर हो दूसरों के लिए, एंड टू वॉक हम्बली, के हलीमी के साथ चलें विथ योर गॉड। कि खुदावन की नजर में मकबूल क्या है, कि यही खुदावन की नजर में मकबूल है। तो वो कहता है कि भी दिस इज व्हाट इट इज खुदावन की ये रास्तबाजी है। ये सारी डेफिनेशन जो है, इट्स द राइचसनेस ऑफ गॉड। It's call us righteous because God is righteous. खुदावंद righteous है कि उसकी नजर में जो ठीक होता है वो वही करता है। जैसे कि उसने इंसान को बनाया, तो क्या उसके लिए वाजिब था कि वो हमारे लिए फिदिया देता? हाँ, उसके लिए वाजिब था, क्योंकि वो खुदावंद है और उसने हमें बनाया है। तो खुदावंद की रास्तबाजी यही थी कि उसने हमें बना के, तो वो हमारी सारी जिम्मेदारी को उठाता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसी तरह वो हमें भी चाहता है कि हम भी रिस्पॉन्सिबल हों, क्योंकि वी आर हिज इमेज, कि हम उसके इमेज हैं। तो इंसान को कहता है कि यू नो व्हाट, जस्ट जस्ट have my all my moral things and all my righteous thing within you, कि खुदावन हमें चाहता है कि जो खूबियां खुदावन की हैं, वो हमारे अंदर हो। अगर वो रास्तबाज है तो हम, अगर उसमें है तो हमें भी रास्तबाज होना है, कि हम भी उसी की तरह उसी की रास्तबाजी में चले। मतलब कि जो उसकी नजर में ठीक है, खुदावन की नजर में जो ठीक है, रास्तबाजी, इट्स अप्रूवल ऑफ गॉड, कि खुदावन की नजर में जो एबल टू अप्रूव इट, that is the righteousness, this is what God wants। उसकी नजर में मकबूल क्या है, कि हमारे अंदर वो मोहब्बत हो दूसरों के लिए, जिस तरह खुदावन के दिल में हमारी मोहब्बत है। हम उसी तरह हम्बल होकर, हलीम होकर चले, जिस तरह कि खुदावन हलीम है। कि हम कितने भी गुनहगार हैं, कितनी भी गलतियां करते हैं, कितनी भी खताएं करते हैं, लेकिन फिर भी खुदावन जो है वो रहम दिल है, और कितना वो हम्बल है कि वो हलीमी के साथ, झुका के साथ हमारी खिदमत करता है। कि हम मतलब हमें कहना चाहिए कि हम तो खुदा के लाडले बेटे और बेटियां हैं, कि लाडले बच्चे हैं। कि जिस तरह एक लाडला बच्चा होता है बाप का, कि वो जो मर्जी गलती खता करे, तो माँ बाप जो है ना, उसकी सारी गलतियां खुदा को माफ कर देते हैं। इसी तरह खुदा की नजर में हम भी लाडले हैं। तो उसकी नजर में यही ठीक है कि मैं, मेरी तरफ से कोई ज्यादती ना हो। खुदावंद राइचस क्यों है? क्योंकि खुदावंद जो है वो राइचस है, कि वो अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लेना चाहता कि भी मैं मतलब कि अपने ऊपर ब्लेम लूं कि मैंने ये नहीं ठीक नहीं किया, मुझे कोई भी ब्लेम ना करे। तो वो हमेशा वही करता है जो कि उसकी नजर में कबूल होता है, तो उसकी जो मोरल जो है, उसके मोरल व्यू में ठीक है, वो वही करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर उस चीज से बाज रखता, हमें हर वो चीज से हमारे से रोकता है, या हमें कोई अच्छी चीज नहीं देता, या हमें हमें मतलब हमारे ऊपर थोड़ी सी सख्तियां होती हैं, आजमाइशें आती हैं। लेकिन ये है कि हम उसमें से वो हमें मजबूत करके निकालता है। तो उसका मतलब ये है कि खुदावंद की रास्तबाजी की बात हम कर रहे हैं, कि खुदावंद की नजर में रास्तबाज क्या है, कि खुदावंद कहता है कि मुझे तुम्हारी कुर्बानियां, जैसे कि वो मीका नेशन ऑफ इसराइल को कह रहा है कि तुम सब जानते हो कि खुदावंद के रास्ते क्या हैं, तुम सब जानते हो कि खुदावंद की नजर में मकबूल क्या है। रास्तबाजी ये होती है, खुदावंद की नजर में मकबूल क्या ठहरता है, कि तुम मर्सीफुल हो एक दूसरे की तरफ,
दूसरों को बर्दाश्त करो, तुम्हारे अंदर फोरबेरेंस होनी चाहिए, दूसरों को बर्दाश्त करना चाहिए, दूसरों को दूसरों के लिए कुर्बानी, दूसरों को खुश रखने के लिए या उनकी वेल बीइंग के लिए अपने आप को कुर्बान करो, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करो। ना कि तुम वो कुर्बानियां दो जो कि मतलब वाजिब नहीं है। मतलब खुदाउन की नजर में वो कुर्बानियां मकबूल नहीं ठहरती जो हम दिल से नहीं करते। क्या हम एक अपना फर्ज पूरा कर देते हैं कि हम कुर्बानी लेकर अपने गुनाहों के कफारे के लिए कुर्बानी लेकर आ जाते हैं? तो क्या खुदावंद सिर्फ इन्हीं चीजों से खुश होता है? खुदावंद इन चीजों से खुश नहीं होता। खुदावंद उन चीजों से खुश होता है कि जो हमारे अंदर से मोरालिटी, हमारी जो मोरालिटी है, हमारे अंदर की जो थॉट्स हैं वो प्योर है, हमारे अंदर की जो मतलब केयरिंग हार्ट है हमारे लिए, कि जो खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरता है, कि वो करता है कि जब हम किसी चीज को जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास हाउसकीपर्स भी होती हैं, वो क्लीन कर रही होती हैं, गार्बेज उठा रही होती हैं, सारा कुछ उठा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गार्बेज उठाने वाली है तो हम गार्बेज और फेंकते जाएं। नहीं, बल्कि मोरल क्या है, राइचस क्या है, कि जब हम गार्बेज फेंकते हैं, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू पिक इट अप आवरसेल्फ। वी शुड नॉट जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्सन, कि हमें उस बंदे का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, कि जो जिस काम कर रिस्पेक्टफुली, कि वी सिट ऑन द वन टेबल एंड वी ईट ऑल टुगेदर। मेरे सामने हाउस कीपर बैठा है। अब इंडिया और पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इस तरह, कुछ कुछ जगह पे ऐसे होता है कि दैट्स नॉट राइचस, क्योंकि हर बंदा अपने अपने काम कर रहा है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो रुतबे में हमसे छोटा है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, नहीं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि भी हम काम कर रहे तो वाटर स्पिल हो जाए, तो वाटर स्पिल क्या है कि वो फॉल हैजर्ड्स है, कि जो पेशेंट्स होते हैं वो फॉल हो जाते हैं, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अगर मैंने ही गंद फेंका है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं इसको साफ करूँ। दिस इज what the righteousness, because you need to go back and think before you go and finish your job and go back and think, what you did right or what you did not do right. क्योंकि हमारे अंदर की जो लड़ाई चल रही होती है, हमारे जहन, हमारे सोचों में, कि क्या मैं वो काम करके आया हूँ तो क्या मेरे लिए वो ठीक था, मैंने वो वहां पे सब ठीक किया। कभी कभी ऐसा होता है कि भी जब हम अपनी रूह से चल रहे होते हैं तो मतलब कि राइटियसनेस यही है कि हम अपनी रूह से चले, कि जो राइट है, जो ठीक है, जो गुड है, we have to adopt the good habits to do it. तो इट्स लाइक अ लिटिल लिटिल थिंग, कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें उनको भी ज़हन में रख के चलना होता है। कि ये नहीं है कि ठीक है, मैं बड़ी हूं या मेरे बच्चे हैं जो भी हैं, तो मैं गंद डालती जाऊं, चलो ठीक है मेरे बच्चे साफ कर लेंगे, चलो ये साफ करो, नहीं। मैं अपने जो जो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको पूरा करूं, जो कि मतलब मैं अपना बोझ किसी को क्यों दूं? कि हमें किसी को अपना बोझ नहीं, किसी का काम बढ़ाने के लिए अपना बोझ उनको नहीं, बल्कि अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। और यही रास्तबाजी है, कि वो कहता है कि खुदाउन की नजर में रास्तबाजी ये है कि जो खुदाउन की नजर में पूरे जो करेक्टर, जो हमें, वी हैव टू लिव एट द करेक्टर eyes of the upright moral lesson. This is the, whatever is morally right, we have to do that. That's the righteousness of God. And justifiable, कि जो जस्टिस है, कि हम किसी के साथ ज्यादती ना करें, हम अपने वो सारे काम करें। अब कल जैसे कि मैं एक और मिसाल देती हूँ, मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बार बार अब ठीक है, मैं मैनेजर हूँ, मैं एक मिसाल देती हूँ कि आई एम अ मैनेजर एट माई वर्क, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रेजिडेंट्स। जितने पेशेंट्स हैं वो मेरे अंडर में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। उनके साथ कोई ज्यादती हो, आई स्टैंड बिटवीन इट, कि मैं उनके लिए खड़ी होती हूँ, कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके लिए मैनेजर हूँ सबके, वो मेरी दे लिसन्स टू मी, आई गिव देम अ ड्यूटी, आई टेल देम व्हाट इज नॉट राइट, व्हाट डिड यू डू, व्हाट यू मिस्ड इट। But that does not give me authority to misuse them, misuse my authority. कि मुझे अपनी authority को misuse करने का हक नहीं है, कि then I still stay low and humble, and if I have to help them, I will help them.
कभी कभी सीएनएज होते हैं वो बिजी हो जाते हैं तो पेशेंट्स को चेंज करना होता है, तो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं जाके चेंज कर देती हूँ। कभी पेशेंट्स जो है वो सीएनएज बिजी हो जाते हैं, हालांकि उनका काम है कि पेशेंट्स को चेंज करना, मेरा काम नहीं है, लेकिन आई डू इट। Why I do it? Because it's needed right there, right now. I cannot wait for the CNA to come and do it. If person is burning with the urine, why cannot I do it? This is what you do it. अगर कोई water spill हुआ है, I take the mop and I clean it. This is with the righteousness in God. This is the morally right. You do it right because the housekeeper is busy in other room, and if you spill it, you clean it. This is the morally right. This is the righteousness. This is what the righteousness is God doing. This is what the right in the God's eye. This is what you will save you. This is what will approve us in the God's eye. That we do not put our burden to others, and if rather we help them if they need it. And if we spill something, we clean it. If we gandala, then would you clean it? And don't let other people see. Be exemplary and give them example. Let them feel that you care about them. This is how the righteousness of God is, the example of the righteousness of God. Then you have to be justifiable. You have to do justice between them. If two people are fighting over something, then you go between them and find out why there's a fight and try to resolve it and do what is justice, what is just in a God. What just means what is approvable in a God's eye. Do that and make sure we should not किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। दो लड़ाई कर रहे हैं, किसी के साथ ज्यादती ना हो। Do resolve the issue in the justice, which is right in a God's eye. This is what the righteousness of God is. This is what is righteous in God's eye. Okay, that how we are the representative ambassador of the God. We are the image of God. How we represent ourselves. This is not about you. This is not about your authority. This is about you. This is about you, how you sell yourself and how you mark the image in other people's eyes. Being a rude, being a bossy and abusive? No. Being a caring, being a loving, and being a team player. No matter, everybody's working for the wages. Everybody's get the dollar in this country. Everybody earned the dollar. It doesn't matter if they earn less or not. Everybody eat the chicken. We eat the chicken. Everybody eat the same bread. We eat the bread, regardless of their designation. Housekeeper se leke administrator tak, they eat the same food. They eat on the same table. And if our administrator, if she see there's a light, somebody needed help, she'll go help it. I'll go help it. Somebody else will go help it. It's not for the CNA. Like I'm giving an example, it's not for the nursing assistant to come and answer the light. Oh no, मैं नहीं answer करनी, nursing up your nursing assistant है ना answer कर लेंगे। तो क्या पता nursing assistant जो है वो इतना busy है, किसी मतलब complicated work में busy है। If you see it, the whose side first go answer the light and help the people. And that is how it's a right thing, morally right things to do it. That is how we work here. That is how it should be. And what is the righteousness of God, which is we saying it, what is approval? Because inside our heart is attached to the God, our souls and our minds and our moral is attached to God. No, we can say, okay, well, I cannot skip it. I cannot walk away from anything, which I can go back and fix it, which I can go back and help it. This is the righteousness in God's eye. This is the righteousness of God. Because we are not just an ordinary people. We represent God onto the earth. And we have to carry what God, all the essence of the God's within us. That is the righteousness of God. And that is how we live eternal. And the righteousness of God, which that
That does not mean, we are righteous because of by believing onto the Christ. That mean, we have to have our morality, which will be the upper inner upper righteousness. Morally, we have to walk. Then we have to be humble, low. If we have to sit on the ground to eat it, sometimes there's no chair. All are sitting. When we have a meeting like all staff meeting. Everybody's sitting on the chair. All from housekeeper to lake the administrator tak, they have a chairs. But sometimes we go as a manager. If there's no chair, if we have to sit on the floor, we sit on the floor. The purpose is to attend the meeting. Purpose is not to go sit on the chairs. You have, because you get paid for that meeting, you have to be there. You have to attend that meeting. That is the main focus. So, like we were talking about the righteousness, खुदावन ने हमें क्या सिखाया कि then we have to be helpful. We have to be merciful. तो मीका इसलिए कह रहा है कि he has shown you, oh man, what is good. कि अच्छाई क्या है कि हमें अच्छाई ही करनी है, कि हमें अच्छा ही करना है दूसरों के लिए, और हमें हम्बल रहना है. एंड व्हाट डज द लॉर्ड रिक्वायर्स ऑफ यू, कि खुदावन तुमसे क्या चाहता है. कि खुदावन ये तो नहीं चाहता कि मैंने तुम्हें अपने सर्वेंट बना दिया तो तुम दूसरों को तुम अब्यूज करना शुरू कर, अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करना शुरू कर दो दूसरों, कि यू अब्यूज योर अथॉरिटी फॉर योर ओन गेन. नो, righteousness is that you have to save the others, can die for to save the others. That's what the righteousness, that's what God wants us. He does not require any sacrifice for us. He wants us to be walk justly, कि हमें जस्टिसली वाक करना है, कि हमें जब किसी का इंसाफ करना है तो हमने इंसाफ को इक्वल इंसाफ ऐसा करना है कि जो खुदाउन की नजर में मकबूल हो. किसी के साथ विदाउट किसी के साथ ज्यादती किए बगैर हम इंसाफ करें. हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे अंदर रहम दिल होना चाहिए हमें. दिस इज व्हाट गॉड वांट्स, कि हमें रहम दिल होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद रहम दिल है. हमारे अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमसे मोहब्बत रखता है. और हमें दूसरों के साथ इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद इंसाफ पसंद है. एंड हमें हलीमी के साथ वाक करना है, आकड़ के वाक नहीं करना, ईगो के साथ वाक नहीं करना, बल्कि हम्बलनेस. अगर कोई तमाचा मारता है मुंह पे तो दूसरा करना. जैसे मैंने उसको कहा कि I rather stay low and humble than speaking up for my own protection. Somebody said to me at my work, I mentioned already, somebody said to my work, why don't you answer back? People talk to you, you don't answer back. I said, where I stand, where I see, I rather stay low and humble than going and taking a revenge and seeking a revenge for my gain. No, I'm not here to seek a revenge. I'm here to forgive people. I'm here to show them a love of the Lord's. And if somebody slash on my one cheek, I will give them. That's how the Jesus teaching it. That's it. It's the humbleness is. Okay, then if somebody wants me to walk 1 mile with them, the Lord telling us you rather go 2 miles with them. Be ready to go 2 miles. कि तुमसे कोई बहुत ज्यादा ज्यादती करते तुम उसकी उस जाति को बर्दाश्त करके जो उसका हाई लेवल की जाति है उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तुम तैयार हो. दिस इज व्हाट द राइटियसनेस इज, दिस इज व्हाट द हम्बलनेस इज, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर. गॉड ब्लेस यू. कि खुदावन चाहता है कि खुदावन की नजर में जो मकबूल है कि वो इंसाफ पसंद है, वो रहम दिल है, वो मोहब्बत करने वाला खुदावन है. और वो हमसे भी यही तवक्को करता है. जब हम उसके तब जाके हम उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं. हम उसके बेटे बेटियां फिर यीशु मसीह पर ईमान लाने से बेटे बेटियां तो हम हो जाते हैं, लेकिन क्या ईमान लाने से क्या हम कंप्लीट हो जाते हैं? नहीं. देन वी हैव टू डू द अदर स्टेप टू. इसी तरह फिर हमें खुदा की तरह बनते हैं, कि खुदा उनके इमेज पे बने हुए हैं और खुदा उनकी लाइकनेस पे होते हैं, कि जिस तरह वो करता है उसी तरह हमें भी करना है. कि बाप बेटे को फॉलो करता है, तो अगर हमारा आसमानी बाप राइचस है तो हमें भी उसी की तरह राइचस, जो वो करता है हमें भी वही करना चाहिए.
تب جا کے ہم اس کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں، تب جا کے ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے